Subscribe to my channel Biodose with Gaurav and press the bell icon for new videos on important biological concepts. Hello to everyone and welcome to this awesome session on prokaryotic cell in detail. ये सेशन जो होगा completely based on the prokaryotic cell हम डिटेल में देखने वाले हैं. ये जो पार्ट है आपका क्लास 11th का बायो का जो तीसरा यूनिट है दैट इज़ अ सेल यूनिट ऑफ लाइफ उसी का पोर्शन है, सेकंड पार्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में ओवरव्यू ऑफ एन सेल कंप्लीट किया था, राइट. और अभी प्रोकैरियोटिक सेल. तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ जो कि हमारा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, they are generally smaller and multiply more rapidly than that of eukaryotic cells. ठीक है. they may vary greatly in shape size. हाँ, जैसे कि हमें पता है दैट बहुत प्रकार के शेप्स में अवेलेबल होते हैं एंड इवन साइज भी वेरी करता है. तो जनरली इनके 4 बेसिक शेप्स है, राइट. 4 बेसिक शेप्स. जो 4 बेसिक शेप्स है उनके दैट आर बैसिलस दैट इज अ रॉड लाइक, the coccus spherical shape, vibrio that is the comma shaped, and spirillum that is the spiral shape. और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं these are having a cell wall surrounding a cell membrane except in the mycoplasm is an prokaryotic cell but it is the smallest living cell, right. And these are generally having some foldings, okay, that are the site of respiration. Okay, the fluid matrix, right. The fluid filled matrix, the cell, is a cytoplasm. There is no well defined nucleus. He is the point which differentiate between a prokaryote and a eukaryote. The differentiated nucleus, okay, defined nucleus, well defined nucleus. Okay, the genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. The absence of nuclear membrane is a major criteria to differentiate between a prokaryote and a eukaryote, right. The additional often genomic DNA, that is the single chromosome, or we can say circular DNA, जो आप सब जानते ही होंगे, that is the what, circular DNA, that is the plasmid, right. Many bacteria have small circular DNA outside the genomic material. These are what, a smaller DNA called plasmids, right. These act as a vector. And nowadays plasmids plays a very essential vital role in biotechnology, right. No organelles like what in eukaryote are found in the prokaryotic cells, except one ribosomes are also found in prokaryotic cells, right. And something unique form in forms of inclusions, right. Most of the prokaryotic cells are particularly bacterial cells, okay, have a chemically complex cells envelope. इनका जो सेल एनवलप है, मतलब जो आउटर वॉल है, कंपोज्ड ऑफ 3 tightly bound 3 layers, right. The outermost, right, जो सबसे बाहरी किनारा है, that is what gycocalyx. उसके अंदर का जो है that is what cell wall. उसके अंदर का है that is a what प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में इतना तक होता है. प्लांट के केस में प्लाज्मा के बाद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होता है. Well, in case of bacteria, that is the third outermost layer, that is the gycocalyx. The bacteria can be classified into 2 groups on the basis on the difference of the envelope and the manner by which they respond to the stains, right. Stain को किस प्रकार से वो respond करते हैं, whether they absorb the stain or not. They can be classified into 2 groups, right. तो जो स्टेनिंग के हिसाब से अगर हम देखा जाएगा तो 2 प्रकार बनते हैं. दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव विच टेक्स अप द स्टेन, ग्राम स्टेन, दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव, एंड विच डू नॉट टेक अप द स्टेन्स दैट आर ग्राम नेगेटिव. ठीक है. जो ग्लाइकोकैलिक्स है डिफर इन कंपोजिशन, right, and in thickness among the different bacteria. It could be loose sheath, that is called what, slime layer. Yeah, that is what, slime layer. In some of others it will be tough, that is a what, capsule form. Cell wall determines the shape of the cells and provide a strong structural support and prevent the bacterium from the bursting or collapsing.
The plasma membrane, that is a what, semi-permeable membrane. Why it is used the term semi-permeable membrane, or we can say that plasma membrane is also known as selectively permeable membrane. Why? Only certain kind of particles can enter through it or pass through it, right? Not all the particles that are available in its surrounding can enter through it. Okay, so it is and what it interacts with the outside world. A special membranous structure, that is the mesosomes, which is formed in the extension of the plasma membrane, जो कि plasma membrane जो होता है in case of what, mycoplasm also, foldings, right? Simply we can say the folding structures, right? Extensions are in form of vesicles that are tubules and lamellae. ठीक है, जो मेसोजोम्स होता है वो तो आपका फोल्डिंग्स होते हैं, दैट इज द साइट ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन, राइट? जैसे ये पॉइंट आपका जो कहता है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट, that mesosomes, right? Helps in the respiration secretion processes and increase the surface area of the plasma membrane from the enzymatic content, right? And in some prokaryotes like cyanobacteria and other membranous extension in the cytoplasm called chromatophores, right? These are what, chromatophores in the sense what, color containing, right? So it contain various pigments, color containing pigments. If we look into the diagrammatic representation of an prokaryotic cell, or we can say bacterial cell, right, anatomy, so it is much more similar to this, right? A cylindrical, it is what, cylindrical shape, that is a bacillus type. और ये जो आपका hair like structures present होंगे, that are smaller hair like structures are known what, smaller we can say that outgrowths that are known as pilus, or we can say the pila, right? एंड जो लंबे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, दैट आर नोन एज व्हाट, फ्लाजिला, और वी कैन फ्लाजिली दो है देयरफॉर, और ये कैप्सूल जैसा है, ठीक है ना? देखो आउटर मोस्ट ये देख रहे हो सर्कुलर डीएनए, इधर एक अलग सर्कुलर डीएनए, राइट? ये जो आप देख रहे हो कर्सर को, ये जो अलग वाला है सर्कुलर डीएनए, दैट इज व्हाट प्लाज्मिड इज. एंड ये जो बड़ा वाला मीन जीनोमिक, that is a nucleoid, that is the DNA, do not having what, a well defined nucleus or a nuclear envelope also. ये साइटोप्लाज्म है, बहुत से राइबोसोम्स हैं, राइट? कैप्सूल वाला टाइप है, ठीक है ना? थिकर वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल. तो आप उसको एग्जाम में भी आप बना सकते हैं, उसमें आपका कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होगा. ओके, दीज हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस. मैंने इसी की बात वही पे किया था, पिलाई एंड व्हाट, फ्लाजेला, राइट? द शेल वॉल हैज called flagella. Okay, the bacteria flagellum composed of 3 parts, right? अगर एक flagella की बात करेंगे, ठीक है, तो 3 पार्ट है, that is filament, okay, hook and what, basal body. Okay, 3 पार्ट है, that are the filament, hook and ये जो नीचे वाला पार्ट है, this is the basal body. द पिली एंड फिम्बरी आप और एक जगह पे भी ये टर्म आप सुने होंगे, दैट इज इन द फिलिपिन ट्यूब. दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in the end of the fallopian tube, that is the infundibulum. These are having some finger like projection that are what known as fimbri, right? For the helps in the engulfing of the egg, or we can say the ovum. These are fimbri, pili. These are small structures. Okay, these are what, smaller structures and surface structures in the bacteria which do not play a role in the motility, right? Main the flagella helps in the motility. The pili are elongated tubular structures made up of what, special proteins, and the fimbri are the small bristle-like fibers that is sprouting out of the cells. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा ये सेशन, एंड कम्प्लीटली दिस इज़ फुली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.